Welcome to JNM Creative. In today's video, I'll be discussing important topics on transmission and distribution of electrical power, along with some question and answers which are very important for competitive examinations. Electrical power distribution system mainly consists of generating stations जहाँ पे वोल्टेज को जनरेट करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वोल्टेज जनरेशन हमेशा एट लो वोल्टेज पे होता है, उसको फिर ट्रांसमिशन के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज स्विचिंग स्टेशंस, जहाँ पे या तो सर्किट को ऑन करते हैं या सर्किट को ऑफ करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेशंस, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में स्टेप डाउन करते हैं। नेक्स्ट इज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, सर्विस ट्रांसफार्मर बैंक, एंड लास्टली सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वोल्टेजेस। वोल्टेज जनरेशन हमेशा 3.3 किलो वोल्ट, 6.6, 11 और 32 किलो वोल्ट में होता है। मोस्ट कॉमन जनरेटिंग वोल्टेज इज 11 किलो वोल्ट। नेक्स्ट, डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स इन इंडिया। प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेजेस, इसमें 110 किलो वोल्ट, 132, 210, 400 या मैक्सिमम 765 किलो वोल्ट ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेजेस, इसमें 33 या तो 66 किलो वोल्ट में वोल्टेज को ट्रांसमिशन करते हैं। फिर नेक्स्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेस, उसमें 11, 3.3 या 6.6 किलो वोल्ट में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एंड लास्टली सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेजेस, इसमें 415 वोल्ट में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एसी एंड डीसी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हमेशा डीसी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ एडवांटेजेस है, जैसे इसमें कॉपर का सेविंग ज़्यादा होता है। एज इन केस ऑफ डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ओनली 2 कंडक्टर्स आर नीडेड। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, सर्ज प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज फ्री फ्रॉम स्किन इफेक्ट, चार्जिंग करंट। फिर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोरोना लॉस बिल्कुल मिनिमम होता है। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस विथ अदर कम्युनिकेशन लाइन, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल कम होता है। फिर पोटेंशियल स्ट्रेस बिल्कुल मिनिमम होता है इन केस ऑफ डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज वोल्टेज लेवल को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट इज एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज step up and step down of voltage level is very easy. Maintenance of AC current substations are also easy. And next advantages is electric power can be generated at higher level voltages. Disadvantage of AC distribution system is power losses में ज़्यादा होता है। फिर spacing between conductors ज़्यादा देना पड़ता है। फिर कॉपर रिक्वायर्ड फॉर एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर इन कंपैरिजन टू डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर्स यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर आर, फर्स्ट इज पिन टाइप इंसुलेटर। ये यूज होता है मैक्सिमम अप टू 50 किलो वोल्ट। हियर यू कैन सी इन द इमेज एन एग्जांपल ऑफ पिन टाइप इंसुलेटर। नेक्स्ट इज सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। ये यूज होता है फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम। हियर यू कैन सी इन द इमेज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। नेक्स्ट इज स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। यूज होता है एट डेड एंड एट शार्प टर्न पर।
Here you can see an image of strain type insulator. Next is shackle type insulator. ये यूज होता है एट लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में. नेक्स्ट इज egg or stay insulator. Here you can see in the image an example of egg or stay insulator. Corona effect in power transmission lines. What is corona effect? In corona effect, ionization of air around the conductor takes place. उसके साथ साथ एक violet glow होता है, hissing noise and production of ozone gas takes place. This is called corona effect या corona loss in transmission line. corona effect की वजह से power loss होता है, interference with neighboring communication line, उसके साथ साथ production of ozone gas होता है. Next is how to minimize corona loss. First is by using bundle of conductors, by using corona rings, and next is by increasing the diameter of conductor. Here you can see in the image how corona discharge takes place in transmission lines. What is skin effect in AC power transmission system? Alternating current tends to concentrate near the surface of conductor और इसको हम लोग बोलते हैं स्किन इफेक्ट इन एसी ट्रांसमिशन. स्किन इफेक्ट ज्यादा होता है in case of high frequency system and also with solid conductors. Next is what are the causes of skin effect. First is it increases the resistance of conductor, and next is reduces the effective area of conductor. How to minimize skin effect? First is by using bundle or stranded conductor. Next is by increasing the voltage level, by using low magnetic permeability material, by reducing the size of conductor. Here you can see in the image how skin effect takes place in a conductor. What is proximity effect and Ferranti effect in transmission line? First, what is called proximity effect? When two conductors are placed very close to each other, their electromagnetic field interact with each other, and due to this, current gets redistributed in the conductor. This non-uniform distribution of current is called proximity effect, and because of proximity effect, it results in the increase of resistance in the conductor. What is factors on which proximity effect depends are frequency, diameter of conductor and material. Next is how to remove proximity effect by using SCSR conductor. Here you can see in the image how proximity effect takes place in a conductor when current flows in the same direction and when current flows in the opposite direction. What is called Ferranti effect in transmission line? When transmission line is open circuited or lightly loaded, then receiving end voltage becomes greater than sending end voltage, and this is called Ferranti effect in transmission lines. Ferranti effect is because of the presence of inductance and capacitance in the line. Ferranti effect is seen in the medium and long transmission lines. How to minimize Ferranti effect? Ferranti effect can be minimized by using shunt reactors in the transmission lines. Here you can see in the image how Ferranti effect takes place in the transmission line. First question is how feeders are designed. Answer is feeders are designed by looking at its current carrying capacity. Next question is how distributors are designed. Answer is distributors are designed mainly looking at its voltage drop. For long distance power transmission, high voltage is preferred mainly to. Answer is in order to reduce transmission losses. Next question is volume of copper required in AC transmission is inversely proportional to. Answer is both voltage and current.
Gay wire in transmission and distribution line is used for? Answer is in order to support the pole. Next question is temperature rise in overhead line leads to? Answer is increase in the sag and decrease in the tension of conductor. Ground wires are made of? Answer is ground wires are made of galvanized steel. Next question is steel wire is used in SCSR conductor in order to improve? Answer is in order to improve the mechanical strength of conductor. RCC poles have a span of? Answer is RCC poles have a span of 80 to 150 meter. Next question is stringing chart is used for? Answer is finding sag in the conductor. Webby structure of pin type insulator increases? Answer is flashover voltage in the insulator. Next question is on 132 kV transmission line which types of insulators are used? Answer is disc type insulators are used on 132 kV transmission lines. Pin type insulators are used in lines? Answer is below 33 kV lines. Next question is at dead end which type of insulator is used? Answer is shackle type insulators are used at dead end. Potential drop in suspension type insulator is maximum at? Answer is across the lowest disc. जो सबसे नीचे डिस्क होता है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ गार्ड रिंग इन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स? आंसर इज to equalize the voltage division between insulator disc. Corona loss increases with? Answer is increase in supply frequency and decrease in conductor size. Next question is corona loss is associated with? Answer is hissing sound, power loss, formation of ozone gas and radio interference with neighboring communication lines. Breakdown strength of atmospheric air is? Answer is 30 kilovolt per centimeter. Next question is skin effect in transmission line is because of? Answer is supply frequency and self inductance of conductor. Skin effect in conductor results in? Answer is it increases the resistance of conductor. Next question is inductance of power transmission line increases with? Answer is increase in spacing between phase conductors. Bundle of conductors are used in high voltage line mainly to? Answer is to reduce corona loss and line inductance. Next question is transmission lines are transposed mainly to? Answer is to prevent interference with neighboring communication lines. Ferranti effect on long transmission line is seen when line is lightly loaded or open circuited. Next question is generalized constant relation for transmission line is? Answer is AD minus BC equals to 1. Velocity of propagation of electromagnetic waves in overhead lines is? Answer is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Next question is surge impedance of the line is given as? Answer is square root of L upon C. Surge impedance of overhead line is in the range of? Answer is 400 to 500 ohm.
Next question is, a surge impedance of transformer is in the range of, answer is 1000 to 2000 ohm. Capacitors are used in power system to, answer is in order to improve voltage regulation of the line. Next question is, distribution system in India are mostly, answer is radial distribution system. Thank you and support me by subscribing my channel.